Good morning, everyone. We'll start with the next problem. We'll continue with the next problem, whatever we have done yesterday. So show that u is equal to half log x square plus y square satisfies Laplace equation, and find the corresponding analytic function and the harmonic conjugate. Okay. So what we have seen yesterday, what is the Laplace equation? Now Laplace equation is del square phi, which is dou square phi by dou x square plus dou square phi by dou y square. And the other name for Laplace equation is the harmonic function. A function which satisfies the Laplace equation is called as a harmonic function. So if we have to show that u is a harmonic function, then we have to show that dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square is equal to 0. So here also you have to show that u is equal to half log x square plus y square satisfies Laplace equation, or in other words, we have to show that u is harmonic. Find the corresponding analytic function by using Milne-Thomson method and the harmonic conjugate v. Okay, this next problem, continuing with the yesterday's topic. So first we have to show that u is harmonic. So u is given as half log x square plus y square. So ux, uxx, uy and uyy are to be calculated. So ux, differentiating u partially with respect to x. So half into log derivative is 1 upon derivative of x square plus y square is 2x upon. So 2 and 2 will get cancelled. We will get ux is equal to x upon x square plus y square. Next, we have to calculate uxx, or differentiating ux again with respect to x partially. So uxx will be, again I've applied u by v method, v into derivative of u, that is 1, minus x into derivative of v, that is 2x upon v square. Simplify this. So if I open the bracket, x square plus y square minus 2x square. So x square minus 2x square can be combined together and written as minus x square. So I'll get uxx to be equal to y square minus x square upon x square plus y square the whole square. Okay, so u is equal to half log. So we have got uxx to be equal to y square minus x square upon x square plus y square the whole square. Next, calculate uy. Next, calculate uy. Uy is the partial derivative of u with respect to y. So same way we will get half is the constant, log derivative is 1 upon x square plus y square derivative is 2y with respect to y, and 2 and 2 gets cancelled, 1 y upon x square plus y square. Similarly, calculating uyy. Calculating uyy. Differentiating uy partially with respect to y. What is the meaning of uy? Uy meaning is partial derivative of u with respect to y. So I'll say it as dou u by dou y. Uyy is the partial derivative of u, or dou square u by dou y square. Okay, that we are denoting it by uyy. Differentiating u 2 times partially with respect to y. So again, if we simplify, we'll get x square plus y square minus 2y square. Again, y square minus 2y square will become minus y square. So minus y square plus x square upon x square plus y square the whole square. Adding both the equations, uxx plus uyy. When we add uxx and uyy, we can see that the answer is equal to 0 because numerator, all the terms will get cancelled. So which means that u is harmonic. ठीक है, 3 part है यहाँ पे. One is you have to show that it is harmonic. Second one is find the analytic function. And then the third part is find v. Harmonic conjugate of u will be v. ठीक है, तो पहले हमने
पहले हमने u को 2 बार डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू x, सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू y, और दोनों को ऐड करना है टू शो दैट u इज हार्मोनिक. When we add both, we can say that uxx plus uyy is equal to 0, which means that u is harmonic. Next, we have to find the analytic function f of z. तो analytic function निकालने के लिए normally we apply Milne-Thomson method. So what is the Milne-Thomson method? What we write ux. If u is given, we calculate ux, uy, put x is equal to z, y equal to 0, and then substitute in f dash of z and integrate. The same procedure here also. So u is given. U is what? Half log. So we have got ux as x upon x square plus y square from the previous step. Harmonic proof करने के लिए we have calculated ux. That same ux I have written over here. So ux is x upon x square plus y square. अभी यहाँ पे putting x is equal to z and y equal to 0. When x is z, y equal to 0, the whole answer becomes ux is equal to, ऊपर z हो जाएगा, नीचे z square, तो z upon z square is 1 upon z. Okay? Substitute. This is to find the analytic function. To find the analytic function when u is given. Then uy. Uy we have got y upon x square plus y square. Again put x is equal to z, y equal to 0. So uy will become 0. Our aim is to find the analytic function f of z. तो f of z निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग f dash of z निकालते हैं. So how to write f dash of z? If f of z is u plus iv, f dash of z is ux plus ivx. So next step will be, we will be writing f dash of z. So f dash of z will be ux plus I into vx. Substituting for ux, what we have got, ux as 1 by z, uy, no, vx is not known to us. So use the CR equations and convert vx as minus uy, converting vx to minus uy. So we will get f dash of z to be equal to ux minus I into uy. Substituting for ux and uy, ux is 1 by z, uy is 0. Substituting those values, we will get 1 by z because uy is 0. So f dash of z is 1 by z, f of z is equal to log z plus c. This is the second part, finding the analytic function f of z. पहले हमने प्रूव किया कि it is a harmonic function. उसके बाद हमने analytic function निकाला है. Now next third part is find the harmonic conjugate. Harmonic conjugate का मतलब है v का पार्ट निकालना है. From log z, because we know f of z is equal to u plus iv. तो हमें log z में से real और imaginary part निकालना है. तो real and imaginary part निकालने के लिए we know that z is equal to, z is always replaced by x plus iy. तो यहाँ पे हमें u और v और the harmonic conjugate निकालने के लिए we will replace z by x plus iy. So when z is x plus iy, I'll write log of x plus iy. Now tell me, what is the real and imaginary part of log of x plus iy? We have done in first semester, log of a complex number. I don't know how many of you remember this. In the first part, in the first semester, we had complex number, hyperbolic function, then we have log of a complex number. Okay. Under that, we have used the formula for log of x plus iy. Or, okay, if you don't remember this, so what is x? We know x plus iy, z is equal to x plus iy, which is the Cartesian representation of a complex number. अगर मैंने इसको r और थीटा में लिखा तो कैसे लिखते हैं हम लोग?
z को r और थीटा में अगर लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं? डू यू रिमेंबर दैट? We write r into e raised to I theta. Okay, the Cartesian form of a complex number is x plus iy. The polar form of a complex number is r e raised to I theta, where e raised to I theta is what is that? R into cos theta plus I sin theta. Yes, you are right. तो हमें क्या करना है? If you don't remember the formula directly, what you do is you substitute the polar form of this complex number. Any complex number can be written in the form r e raised to I theta, where r is the modulus of x plus iy and theta is the argument of x plus iy. What is the modulus of any complex number? It is square root of x square plus y square. And theta is the argument. Theta is calculated by tan inverse of y by x. Okay. So any complex number in the Cartesian form can be written in the polar form as r e raised to I theta, where r is the modulus of this complex number and theta is the argument. So now we are having log of two functions, log of a into b. So I will expand that. I will write this as log r plus log of e raised to I theta. Log of e raised to I theta, log and e will get cancelled. I will get I theta. Okay. Now what is r? I told you r is the modulus. So r is the modulus which is given by square root of x square plus y square. Theta is the argument which is tan inverse of y by x. ठीक है? So log of x plus iy, if you don't remember the formula, convert that to polar form and then use the property of log and substitute for r and theta. मतलब क्या है? Log of any complex number is log of its modulus plus I into the argument. जो भी complex number रहेगा उसका modulus निकालना है, that will be log r plus I into इसका argument निकालना, that is equal to theta. So now what was the given problem? ना हमारा u क्या दिया था question में? It was half log x square plus y square, है ना? So this is a function u given to us. So the harmonic conjugate will be the v part, that is equal to tan inverse of y by x. Tan inverse of y by x. Any doubt in this problem? Okay, अगर ये formula याद है log of x plus iy, you can write it directly. If you don't remember, any log of any complex number, कुछ भी रहने दो यहाँ पे real and imaginary part, उसका मॉड्यूलस निकालना है, यहाँ पे लिखना है, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है I into थीटा. इमेजिनरी पार्ट जो आर्ग्यूमेंट हो जाता है और रियल पार्ट जो है इसका लॉग ऑफ मॉड्यूलस हो जाता है. ओके, सो हार्मोनिक कॉन्जुगेट V will be equal to tan inverse of y by x. Clear all of you? Any doubt in this? Okay, ठीक है. So we'll go to the next problem. If anybody is having doubt, you can ask. ठीक है. 3 पार्ट है, तो if you know these 3 parts, almost every I think complex number का पूरा हो जाता है इसमें. हार्मोनिक कैसे प्रूव करना है, एनालिटिक फंक्शन कैसे निकालना है और v कैसे निकालना है. Almost the whole chapter deals with these 3 concepts and the CR equations. वही हमको याद रखना है to calculate, to what is that, to study this complex. Okay. Next वाला problem. Little bit lengthy problem. Okay. Same, हमको हार्मोनिक प्रूव करना है, v निकालना है, f of z निकालना है. Problem is same. I've taken this problem, थोड़ा सा lengthy है और थोड़ा सा complicated है. So we have to do it very systematically to get the answer. Show that the function u is e raised to minus 2xy sine of x square minus y square is harmonic. 3 पार्ट, यहाँ भी 3 ही पार्ट प्रूव करना है. हार्मोनिक प्रूव करना है, फंक्शन f of z निकालना है और v निकालना है. हार्मोनिक प्रूव करने के लिए u को 2 बार x से डिफरेंशिएट करना है, y से डिफरेंशिएट करना है, दोनों को ऐड करना है. एनालिटिक फंक्शन करने के एनालिटिक फंक्शन निकालने के लिए f of z निकालने के लिए f dash of z निकालना है और f dash of z निकालने के लिए ux and uy
एट द पॉइंट z, 0 निकालना है, और जब f of z मिलेगा उसमें z को x plus iy पुट करके हमें v निकालना है. That is going to be the procedure. Okay, so now u is equal to, so first show that u is a harmonic function. So u is, now calculate ux or find ux. Ux is the partial derivative of u with respect to x. There are two functions of x. ठीक है, तो हमें u into v अप्लाई करना पड़ेगा. तो what is the first derivative? ux क्या हो जाएगा? e raised to, just do it systematic. बहुत सारे terms यहाँ पे आने वाले हैं, so do it systematically. If you write tensor, you will understand clearly क्या कर रहे हैं हम लोग. You just see, you may not be able to find. Okay, so ux, तो पहला फंक्शन लिया है, सेकेंड को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. तो साइन का डेरिवेटिव cos और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, क्योंकि हम x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस साइन फंक्शन इंटू e रेज टू माइनस 2xy का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा माइनस 2y e रेज टू माइनस 2xy. तो u इंटू v हमने अप्लाई किया है इन दिस प्रॉब्लम. ठीक है, दोनों ही फंक्शन x और y में है, तो हमें u इंटू v अप्लाई करना है. u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, माइनस साइन हैज कम बिकॉज ऑफ दिस डेरिवेटिव पार्ट. ठीक है, नाउ uxx और एक बार डिफरेंशिएट करना है. ux इज सिंपल एटलीस्ट. uy, तो अभी हमको डिफरेंशिएट करना है और एक बार. Okay. तो मैंने क्या कर दिया, फिर से e रेज टू टर्म को मैंने बाहर ले लिया है और बाकी के जो टर्म्स है उसको एक ब्रैकेट में डाल दिया है. ठीक है, देयर आर बोथ द टर्म्स आर कंटेनिंग e, नहीं तो क्या तीन फंक्शंस हो जाएंगे यहाँ पे. e रेज टू x होगा, cos x होगा, यहाँ पे x भी होगा. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग थ्री, दैट इज व्हाट इज दैट product rule for three functions, I am taking e raised to minus 2xy common, तो बचेगा 2x cos minus 2y sin. ठीक है, फिर से u into v अप्लाई करेंगे हम लोग. पहले फंक्शन को e raised to ले लेंगे और सेकेंड फंक्शन को पूरा ब्रैकेट टर्म ले लेंगे. ठीक है, तो नाउ डू इट केयरफुली, बहुत सारे टर्म्स आएंगे इसलिए. नाउ uxx, दिस इज ux. Now differentiating uxx, तो फर्स्ट फंक्शन मैंने ऐसे ही लिखा है, into the derivative of the bracket term. ये पूरा एक ब्रैकेट है, वन मोर क्लोजिंग ब्रैकेट इज रिमेनिंग हियर. ओके, ये दोनों टर्म का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना है पहले. तो यहाँ पे 2 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, x into cos का डेरिवेटिव लिखना है. तो इंस्टेड इनसाइड दिस ब्रैकेट टर्म वी विल अप्लाई u into v. तो यहाँ पे x into डेरिवेटिव ऑफ cos which is minus sin into डेरिवेटिव ऑफ x square minus y square which is 2x plus 2 into x का डेरिवेटिव that is 1 cos as it is. ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 कांस्टेंट है, x into cos दो फंक्शन है, उसको मैंने u into v अप्लाई किया, फर्स्ट 2 टर्म्स लिखा है इनसाइड द ब्रैकेट, प्लस ये हो गया पहले टर्म का. सेकेंड टर्म में 2y कांस्टेंट है. ठीक है, 2y कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x, दैट इज 2x. ये हो गया पहला टर्म. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टर्म इज इन द फर्स्ट लाइन, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू टर्म with respect to x will become minus 2y e raised to minus 2xy. बहुत सारे टर्म्स हैं बट डू इट केयरफुली. u इंटू v हमको अप्लाई करना है. पहले इसको u इंटू v किया, e रेज टू माइनस 2xy को u लिया है, पूरे फंक्शन को v लिया है. तो पहला डेरिवेटिव फर्स्ट लाइन में आ गया, सेकेंड पार्ट का डेरिवेटिव सेकेंड में, सेकेंड मतलब v इंटू डी यू का वाला पार्ट. दिस इज v, दिस इज du, दिस इज u and this is dv. Any doubt? Just see whether all the terms are written correctly. Because if one minus sign plus sign, if there is a slight change, everything will go wrong. Is it okay? पहले टर्म में मैंने ब्रैकेट टर्म को डिफरेंशिएट किया है और सेकेंड लाइन में e रेज टू माइनस 2xy को डिफरेंशिएट किया. Now
simplifying, तो again I think everywhere I can take e raised to minus 2xy common, है ना? So if I take e raised to minus 2xy common, पहले टर्म में रहेगा minus 4x square into sin plus 2 cos, यहाँ पे भी minus 4xy cos, इसको मैंने e raised to xy बाहर ले लिया है, तो minus 2y into 2x, so minus 4xy into cos, minus into minus plus 4y square into sin. ठीक है? Systematically you have to do it. It looks big, but then if you do it systematically, you will get the answer. u into v apply करना है. Because if you see that, you will see so many terms, but you won't understand what we are doing it. If you just do it on your own, differentiating u first with respect to x and again differentiating with respect to x. Differentiating u 2 times with respect to x and with respect to y. Is it okay, the step equation 1? Just check all the signs also so that are you following? Differentiate ही कर रहे हैं यहाँ पे और कुछ नहीं कर रहे हैं. We are just differentiating and ठीक है, तो ये हो गया equation 1. Equation 1 ही इतना बड़ा है. In a same manner, differentiate u partially with respect to y. So don't get scared by seeing those so many terms. कोई बड़ा differentiation नहीं है, तो simple differentiation. Only thing we have many terms here. ठीक है? Next is uy. u को y से differentiate करना है. फिर से u into v आ जाएगा. First function, derivative of v, that is minus sin का derivative cos, x square minus y square का derivative minus 2y. Then sin into derivative of e raised to. See, normally in the paper what we find, you know, the derivative of cos of x square minus y square अगर निकालना है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, cos का डेरिवेटिव यहाँ माइनस साइन लिखते हैं और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का 2x अंदर ही अंदर लिख देते हैं. इट इज लाइक cos ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन ऑफ 2y और 2x. इट इज नॉट दैट वे. इट इज 2 टाइम्स पहला साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ दिस फंक्शन इनटू माइनस 2y. दैट इज अ कॉमन मिस्टेक अगेन यू फाइंडिंग. आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स आर डूइंग दैट वे. cos का भी डेरिवेटिव साथ में करते हैं, इसका भी साथ में कर देते हैं. In one step, they do sine minus sine of 2x. That is not the derivative. Okay, so be careful in differentiating. ठीक है, अभी इसको और एक बार जैसा हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया वैसा ही और एक बार y से डिफरेंशिएट करना है. So I think again I can take e raised to minus 2xy common. If I take e raised to minus 2xy common, the remaining terms, even minus sign can also be taken common, I think. I've kept minus sign inside the bracket only. Again use u into v. Bracket term को एक term लेना है, e raised to को दूसरा term लेना है, u into v. ये पूरे bracket term को हमें एक term लेना है, ठीक है? e raised to minus 2xy के अलावा जितने टर्म्स हैं उसको हमें v करके लेना है. फिर से u into v. तो फर्स्ट फंक्शन into the derivative of this bracket term. minus 2 is the constant. फिर y into cos का derivative. Again यहाँ पे u into v आ जाएगा. 2 is also common. Yes, I can take 2 common. I can take minus 2. Everything is possible. Okay. मैंने यहाँ पे लिया नहीं है क्यों भूल गए लेने को. I have not taken, but you can take 2 common. Minus 2 also can be taken common. Everything, all simplification. खाली derivative बराबर होना चाहिए. Constant is not having any problem here.
That's up to you, whichever way you want to simplify. तो अगर मैंने u y तो मैंने 2 को वैसे ही रखा है, मतलब कुछ लिया अंदर बाहर नहीं लिया है मैंने. तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इसका डेरिवेटिव. तो अभी -2 इज अ कांस्टेंट, y इनटू cos का डेरिवेटिव. cos का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन, so that minus and this minus goes, so I'll get a plus sign into derivative of x square minus y square with respect to y is -2y minus 2 into y का डेरिवेटिव 1 cos function as it is. यहाँ पे -2x कांस्टेंट है with respect to x, साइन का डेरिवेटिव cos of x square minus y square का डेरिवेटिव -2y. Close this bracket also here. I've forgotten one bracket here. ठीक है. This is पहला टर्म है, u into u dv वाला टर्म है. नेक्स्ट हमको करना है v into du. तो v into du में अगेन इसका डेरिवेटिव which is -2x e raised to -2xy in bracket term as it is. This was asked once in the exam. That's why I thought I'll take this problem here also. Now take e raised to -2xy common and simplify. u into v, बाकी कुछ हमने फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, खाली u into v ही अप्लाई किया है. If you simplify that, I've taken e raised to -2xy common, so -2y into -2y minus 4y square into sine -2 plus 4xy into cos minus 2x into -2y will become 4xy into cos, minus into minus is again plus 4x square sine of x square minus y square. Check what you have got in uxx, whether they are the same terms with opposite signs. Same terms you'll be having it there also with a slight sign change. अगर यहाँ पे जहाँ प्लस है वहां पे वो माइनस होगा, यहाँ पे जो माइनस है वहां पे वो प्लस हो जाएगा. Just check those values uxx and uyy. Is it okay? 0 आ रहा है? Okay. Yes. थोड़ा बड़ा है, बड़ा in the sense because there's so many terms in this. That is why it looks a little bit complicated, but otherwise it's not difficult. U into v ही करना है हमको और कुछ नहीं करना है. फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, U is harmonic. ये बड़े बड़े टर्म्स आगे we forget what we are proving actually. है ना? We have to show uxx plus uyy equal to 0 to show that U is harmonic. तो पहले हमारा U दिया हुआ है, हमने ux निकाला, uxx निकाला, uyy और दोनों को ऐड किया. And we see that when we add uxx plus uyy, we are getting similar terms with opposite signs. That is why all the terms will get cancelled and we will get the answer to be equal to 0. Now next part. Next part क्या है? Find the analytic function. ये वाला हो गया slide. Can I go to the next one? Because when you write it from the screen to your notebook, it's going to take so much of time. अगर खुद करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा. Okay, so I'll go to the next part to find the analytic function. Analytic function निकालने के लिए already we have calculated ux. I'm writing it again. Ux here
put x is equal to z, y. This is already calculated in the previous step to prove u is harmonic. ux हमने पहले ही निकाला हुआ है. उसमें put x is equal to z and y equal to 0. तो क्या बचता है? अगर y को 0 पुट किया तो पहला वाला जो e रेस टू का टर्म है वो 1 हो जाएगा. यहाँ पे बचेगा 2z cos z square. ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा बिकॉज y इज 0. So we will get ux is 2z cos z square. ठीक है. Next is uy. Uy also we have calculated in the previous step. Again putting x is equal to z, y equal to 0. तो ये 1 हो जाएगा. ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. यहाँ पे आएगा -2z into sin z square. ठीक है. तो ux is 2z cos z square, uy is -2z sin z square. अभी हमें क्या करना है? Once we calculate ux and uy, substituting in f dash of z. Okay? ux is already calculated in the previous step. वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. u was this function. इसको differentiate किया तो हमारा ये आंसर आया था. उसमें x को z पुट करना है, y को 0. I will get ux to be equal to this. Similarly, uy में differentiating u partially with respect to y, वहां पे भी x को z, y को 0. So we get ux and uy. Now substitute these in f dash of z. Substitute in f dash of z and then see how to integrate that function f dash of z. These steps are same every time. We're in the same steps. So f dash of z, we know it is ux plus ivx. Since Vx is not known, we are replacing Vx by minus Uy using the CR equations. And then substituting for Uy was minus 2z, that is why यहाँ पे plus आ गया. Okay. Our aim is to integrate this function. Before integrating, I can take 2z common. If I take 2z common, the remaining will be cos z square plus I into sin z square. Cos theta plus I sin theta के form में आ जाएगा. That will be e raised to I theta. So I will take 2z common first. I will write cos z square plus I into sin z square. Now cos theta plus I sin theta is e raised to I theta. So we will get 2z e raised to I z square. F dash of z is reduced to 2z e raised to I z square. Now we have to integrate this. Integration of 2z e raised to I z square. Tell me, how will we integrate this function? Which method is better in evaluating this integral? जिससे हमें easily आंसर आ जाना चाहिए इसका. So just let me know which method we can apply to evaluate this integral. Yeah. Now Prasad, uv if you do ना यहाँ पे z square का term है, तो it becomes little bit complicated. ठीक है? To avoid that, as Uttara said, that is better. Substitution is better यहाँ पे. uv का थोड़ा complicated because z square का term होने के थोड़ा सा complicated हो जाएगा. Just to avoid that, I can put z square as t. क्योंकि अगर मैंने z square को t put किया तो 2z dz dt हो जाता है. So it reduces to a simpler form. So what we will do is z square को t put किया तो 2z dz dt हो जाता है.
तो ये 2z dz के बदले dt हो जाएगा, यहाँ पे e raised to it हो जाएगा. तो I can write it will become e raised to it into dt. Okay? So UV method, you what is that? You don't apply it. Avoid using it when you have a fraction, when you have some function in the exponentials or log or trigonometric function. ठीक है, अगर वो सिंप्लीफाइड है पहले ट्राई करो, अगर नहीं होता तो यू हैव टू अप्लाई u into v. बाकी कोई मेथड है तो वी ट्राई दैट मेथड एंड देन फाइंड ट्राई टू इवैल्यूएट दैट इंटीग्रल. ओके, नाउ e raised to it का इंटीग्रेशन हो जाएगा e raised to it divided by I. Now, what is 1 upon I? I told you we should not keep I in any complex number in the denominator. तो हम क्या करते हैं? What is 1 upon I equal to? Anybody? I told you we normally don't keep any complex number in the denominator. We multiply and divide by the conjugate. हाँ, तो क्या होगा 1 by I का? अगर if you multiply and divide by the conjugate, what is 1 upon I? Minus I. Yes, 1 upon I को मैंने अगर minus I upon minus I से किया तो I'll get I upon, नहीं, minus I upon I square, minus I square, that will become minus I. तो 1 upon I is minus I e raised to it. लेकिन मैंने t को, you have to replace now t in terms of z square. So I will get minus I e raised to I z square. So f of z is equal to minus I e raised to I z square. This is the, and plus c we have to write. I forgot to write that plus c part also. Okay, we have a constant of integration plus c. So write plus c also after integrating. यहाँ पे plus, लेकिन वो c को 0 ले लेते हैं हम लोग जब when we calculate the harmonic conjugate. ठीक है, सेकेंड पार्ट भी हो गया. पहला पार्ट हमने प्रूव किया कि u is harmonic. Second one we have calculated f of z, the analytic function f of z. तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया है टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन. Now put z is equal to x plus iy and calculate the v function or the imaginary part of this function. f of z को x plus iy पुट करना है राइट हैंड साइड में. अगर z को x plus iy पुट किया हमने तो क्या आएगा? माइनस आई इंटू आई ई रेज टू आई z स्क्वायर के z के बदले x plus iy. So it will become x plus iy the whole square. ठीक है. Now expand x plus iy the whole square in the power rule. Don't take it. पहले इसको वहीं पे सिंप्लीफाई करते हैं पहले. So we will get minus I e raised to I a plus b the whole square. तो a square 2ab plus b square. बट आई स्क्वायर वाई स्क्वायर का माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, a प्लस बी द होल स्क्वायर हमें एक्सपैंड करना है. तो a स्क्वायर 2ab प्लस आई वाई द होल स्क्वायर, बट आई स्क्वायर इज -1, सो आई विल राइट माइनस वाई स्क्वायर. नाउ कलेक्ट रियल एंड इमेजिन और टेक आई इनसाइड. नाउ टेक आई इनसाइड. माइनस आई e raised to I x square. I into I is I square, that is -1, so 2xy. I अंदर ले लिया तो माइनस आई वाई स्क्वेयर. So now if I collect the real and imaginary part, the real part is minus 2xy and the imaginary part is I into or x square minus y square. ठीक है, हमने क्या किया? इंटीग्रेशन होने के बाद पुटिंग z is equal to x plus iy, तो z के बदले x plus iy पुट किया है. a प्लस बी द होल स्क्वायर यूज किया है. फिर ये i को अंदर लिया है हमने और उसके बाद जो i वाले टर्म है उसको साथ में लिखा है एंड बिना i वाले टर्म्स को द रियल पार्ट इज रिटन सेपरेटली. नाउ वी विल सेपरेट दैट. ठीक है, अभी यहाँ पे e रेज टू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो इसको हम लिखेंगे e रेज टू दिस टर्म इनटू e रेज टू माइनस 2xy. ठीक है, इसको हमने सेपरेट किया है. e रेज टू x प्लस आई वाई है तो e रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू आई वाई. वैसे ही
e raised to iy into e raised to minus 2xy. इसको एक टर्म इमेजिनरी पार्ट को एक टर्म किया है और रियल पार्ट को एक टर्म कंसिडर किया और दोनों को सेपरेट किया है. e raised to this into e raised to this. Now again e raised to I theta. Again e raised to I theta is cos theta plus I sin theta. तो यहाँ पे फिर से e raised to I theta के बदले cos theta plus I sin theta, where theta is x square minus y square. बाकी सब टर्म सेम रखे हैं हमने. Minus I e raised to minus 2xy into cos of x square minus y square plus I into sin of x square minus y square. Again take minus I inside, because we want to get the real and imaginary part of the whole function. फिर से minus I को अगर अंदर लिया तो we will get e raised to minus 2xy minus I into I. That will become minus I square, but I square is minus 1, so minus I square will become plus 1 and minus I into cos 1 function. So this was the given problem. In the whatever the problem given, u is equal to ये दिया हुआ था. So we have got the imaginary part or the harmonic conjugate as v is equal to minus e raised to minus 2xy into cos of x square minus y square. You have to get, so you don't even require any answers for that. Once you get the final answer, u जो given function अगर दे दिया है तो your v is going to be right only. Once if you're not getting this u function correctly, which means that you have made some mistake. After simplification, when you calculate, when you get the given function as u, which means that whatever you have done is right. That is one way of checking your answer also. Okay, so v is equal to, and u was this function. We have calculated ux, uy using this function only. So v is equal to the harmonic conjugate, e raised to minus 2xy into cos of x square minus y square. ठीक है, थोड़ा बड़ा है प्रॉब्लम. Remember the methods, procedure. जो भी प्रॉब्लम आएगा, you have to follow the same procedure. हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है. e raised to को हमें रियल एंड इमेजिनरी में कैसे लिखना है, log को e raised to में, sin को e raised to मतलब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में कैसे लिखना है. Those things are to be remembered. In the last step, you have to get the real and imaginary part of the whole function. तो e raised to आया तो हम कैसे लिखते हैं, log आया तो हम कैसे सेपरेट करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में, वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया. Only those things are to be remembered. This is one type of, it's not a theory part, but problems based on the harmonic function. This also was asked, I think, in one for 6 marks. These type of, one of these types, I don't remember which one was asked, but one of these was asked 2 years back. If u is a harmonic function, prove that f of z equal to ux minus iuy is an analytic function. Yesterday we have seen the property. What was that property? When u and v are, when f of z is analytic, u and v are harmonic. If u and v are harmonic, f of z need not be an analytic function. But if u and v are not harmonic, f of z is not an analytic, we have seen. So यहाँ पे u harmonic दिया है, तो हमको prove करना है कि ux minus iuy is an analytic function, not f of z. We have to prove ux minus iuy. So just start what is given and what is to be proved. तो क्या दिया है पहला? If u is a harmonic function, मतलब that is a given condition. So u harmonic function मतलब we can write uxx plus uyy equal to 0. ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं कि uxx is equal to minus uy. ठीक है, we have got the first condition that u is a harmonic function. So we have got the condition that uxx is equal to minus uyy.
सेकेंड पार्ट, प्रूव क्या करना है, f of z is an analytic function. This is the given condition. This is to be proved. For simplicity, I will take this function as u, capital U, and this as capital V. तो मैं क्या करूंगी, let capital U be ux and capital V be minus uy. ठीक है, मतलब हमें प्रूव करना है कि f of z is equal to capital U plus I into capital V is analytic. तो अगर कैपिटल U और V को एनालिटिक प्रूव करना है तो हमें क्या प्रूव करना है, अगर हमें U और V एनालिटिक है प्रूव करना, नॉर्मली व्हाट वी डू, वी चेक द CR इक्वेशंस. तो वी हैव टू चेक द CR इक्वेशंस फॉर कैपिटल U एंड कैपिटल V. यस, वी हैव टू चेक द CR इक्वेशंस फॉर कैपिटल U एंड कैपिटल V, है ना. तो हमने इसको कैपिटल U ले लिया, इसको कैपिटल V ले लिया. So now we have to show that U plus IV is analytic. Capital U plus IV is analytic. तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, UX is capital UX is equal to capital VY and UY is equal to minus VX. Everything in terms of capital function. To prove that U plus IV is analytic, or we have to show that UX is equal to VY and UY is equal to minus VX. तो हमारा U क्या फंक्शन था, U we had it as ux, U था ux. So what will be capital U with respect to x? Capital ux क्या होगा, अगर capital U ux है तो what will be capital ux? Differentiating capital U with respect to x will be capital ux. Right hand side में क्या आएगा आंसर, ux का मीनिंग होता है डो u by डो x. तो डो यू बाई डो एक्स को और एक बार अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डो स्क्वायर यू बाई डो एक्स स्क्वायर और यू एक्स एक्स, करेक्ट. तो यू एक्स विल कैपिटल यू एक्स विल बिकम यू एक्स एक्स. व्हाट इज यू वाई, कैपिटल यू एक्स स्मॉल यू एक्स एक्स. नाउ व्हाट इज कैपिटल यू वाई, यू एक्स को हमें वाई से डिफरेंशिएट करना है, मतलब डो यू बाई डो एक्स को हमें वाई से डिफरेंशिएट करना है. So I will get dou square u by dou y dou x, or I can write this as, okay, मैंने v लिया यहाँ पे, तो vy is equal to minus uyy. okay, मैंने पहले क्या किया है, ux equal to vy प्रूव करने के लिए I have taken u and v and then showed that ux is equal to vy. Now how they are equal, from equation 1. तो मैंने पहले फर्स्ट सीआर इक्वेशन के लिए u लिखा है, v लिखा है, ux निकालना है और vy निकालना है. Now ux is equal to vy के लिए uxx should be equal to minus uyy, and that we have got from equation 1. So that is why ux is equal to vy. Now calculate uy and vx. तो uy हो जाएगा uyx, differentiating ux partially with respect to y. तो do uyx. Similarly, v है माइनस यू वाई, तो v x हो जाएगा माइनस यू एक्स वाई. Now are they equal, uxy and uyx? Dou square u